ओके, तो ज्योमेट्री की जो बेस है बेसिकली डिपेंड करती है एंगल प्रॉपर्टीज और पॉलीगॉन प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द एंगल प्रॉपर्टीज। Let's say we have two lines which are parallel. Okay, we have two parallel lines, and we can clearly see कि जो थर्ड लाइन है, जो पर्पल कलर लाइन है, वो इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को। तो इफ अ लाइन इज इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस, तो वी मे सी मल्टीपल एंगल्स। हमें यहाँ पर मल्टीपल एंगल्स नजर आएंगे। कौन सा एंगल किसके बराबर होगा वो जरा देखते हैं। लेट से मैंने आपके सामने एंगल बनाया ए, तो जनाब ये एंगल यहाँ रिपीट होगा। इसको मैं कहता हूँ व्हाट इज द चैप्टर नेम। उज़ैफा बेटा, हेडिंग डली हुई है टॉपिक की ज्योमेट्री, और उसके बाद दोबारा से हेडिंग डली हुई है एंगल प्रॉपर्टीज। तो नाउ यू नो के कौन सा चैप्टर है। ठीक है उज़ैफा? यस सर। ओके, तो वी हैव टू पैरेलल लाइंस। टू पैरेलल लाइंस के अंदर हमने ये देखा कि हमारा जो एंगल ए है वो सेम साइड पर है। सेम साइड से मतलब क्या है कि जनाब दोनों जो एंगल ए हैं वो लाइन वन और लाइन टू के बिलो है, और लाइन थ्री के राइट हैंड साइड पर। तो इसका मतलब है लाइन थ्री के राइट साइड पे जो भी एंगल्स हैं वो आपस में सारे के सारे बराबर होंगे, और इनको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं हम इनको भाई? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वी कॉल देम कॉरेस्पॉन्डिंग। तो जनाब इसी तरीके से अगर ये दो एंगल्स की बात की जाए जो मैंने यहाँ पर बी से मार्क किए हैं, ये दो एंगल भी आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन थ्री के राइट साइड पर हैं और लाइन वन लाइन टू के ऊपर हैं। तो जनाब एंगल्स ऑन द सेम साइड will always be equal. Is that clear to all of you? यस सर। I need responses from everyone. Yes, sir. Clear, sir. Yes, Ibrahim, are you clear? Tahreem, are you clear? जी सर। Yes, sir. Okay. So Janab, now I am moving forward. The same diagram I am drawing, but right now I am discussing the opposite angle. What are opposite angles? Currently, the given angle A is basically on the right side and below L1. The opposite angle to it will be on the left hand side of L3 and above L2. That is known to be alternate angles. The angles on the opposite side of the parallel line. You can clearly see जो पहला वाला A है और जो दूसरा वाला A है, ये एक दूसरे के राइट लेफ्ट है, ऑपोजिट साइड पर है। एक लाइन वन के नीचे है और एक ऊपर है। सिमिलरली तो इनका नाम मैंने आपको बताया था जिनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। और ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑन द डिफरेंट साइड, इनको हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो सिमिलरली अगर हमारे पास ये एंगल यहाँ पर होता है बी, तो जनाब ऑपोजिट साइड हमारी ये होता है बी। क्योंकि हमने लाइन वन के अबव देखा है इस एंगल को और लाइन थ्री के राइट पे देखा है, तो दूसरा एंगल हमें लाइन थ्री के लेफ्ट पे देखना पड़ेगा और लाइन टू के बिलो देखना। इज दैट क्लियर? Yes, sir. All of you are clear? Please respond. Yes, sir. ओके जी, हुज़ैफा आर यू क्लियर? यस सर। आगे चलते हैं। We have two intersecting lines and at maximum we will have four angles. So we can see the opposite angles are equal to each other. The opposite angles are
equal to each other. So these two angles A and below it is also A. जो ऊपर वाला A है और जो नीचे वाला A है वो दोनों आपस में बराबर हैं. क्या ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. जी सर. Okay. Then opposite angles will always be equal. आगे चलते हैं. Just a minute. Okay. Angles originating from the same position. जनाब एक पॉइंट है हमारे पास, उससे मल्टीपल लाइंस निकल रही हैं. अगर एक पॉइंट से मल्टीपल लाइंस निकल रही हैं तो इन सब का जो सम है वो हमें पता है कि कितना होना चाहिए, 360 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इट मेक्स अ कंप्लीट सर्किल. इट मेक्स अ कंप्लीट सर्किल. तो जनाब एक ही पॉइंट से मल्टीपल एंगल्स अगर निकलते हैं तो इन सब का जो सम है वो 180 360 के बराबर. जनाब ये सम 180 के बराबर क्यों होता है? जब भी आप स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन की जो एक साइड है, स्ट्रेट लाइन की जो एक साइड है, उनके एंगल का जो सम है वो 180 के बराबर होता है. वी ऑल्सो कॉल इट सप्लीमेंट्री एंगल. तो जनाब इनका सम हमेशा 180 के बराबर होता है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. Yes, sir. यहाँ तक नोट कर लिया सबने? जी सर. ओके जी, आगे चलते हैं. तो रूप आर यू क्लियर? Yes, sir. जनाब ट्राइंगल को अगर हम देखें, ट्राइंगल हैज 3 कॉर्नर्स, triangle has 3 sides, and triangle has 3 angles. And we know that the sum of all the angles in a triangle is always 180 degrees. So we know that the sum of all the angles in a triangle will always be 180 degrees. Assalamu alaikum Javeria, can you hear me? Okay. So similarly, if I prolong the side, अगर मैं इस साइड को prolong कर दूं, तो मैंने एंगल C को prolong किया है. So this portion is basically, this angle is known as exterior angle of C, and the property says that the exterior angle will be the sum of other interiors. So now any exterior angle is the sum of other two interiors. So let's say अगर मैंने exterior angle C mark किया है, it will always be equals to the sum of two interiors. So if I add A and B, it will give me the exterior of C. Similarly, if I add B and C, it will give me exterior of A. If I add A and C, it will give me exterior of B. Any problem in this property? So let's say we have a triangle. Let's say this is 30, this is, let's say 50. So this will be what? Let's say this is 45 and this is, let's say, 55. The outer one will be 100. Why?
because 55 and 45 makes 100. Is there any issue? All of you are clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now for quadrilateral. A quadrilateral can be cut into two triangles. If you have a quadrilateral can be cut into two triangles by using the vertices of the quadrilateral. At max, we can have two triangles. तो जनाब हमारे पास मैंने क्या बताया आपको कि क्वाड्रिलेटरल को एट मैक्स हम क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगल में ब्रेक कर सकते हैं. अब अगर मैं यहाँ से यहाँ जोड़ूं तब भी एट मैक्स दो ही ट्रायंगल बनेंगे बाय यूजिंग द वर्टिसेस. हम स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यहाँ से यहाँ भी आप जोड़ दें तो सर एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया. प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस तरह ट्रायंगल लेता हूँ तो ये जो मेरा वर्टेक्स है ये क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स नहीं है, तो ऐसे ट्रायंगल्स में काउंट नहीं कर सकता. तो जनाब मुझे ट्रायंगल्स ऐसे बनाने हैं जिसके वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हों. तो अब मुझे बताएं कि वन ट्रायंगल हैज अ सम ऑफ 180 डिग्री. वी हैव टू ट्रायंगल्स. तो वन triangle has a sum of 180 degree. In a quadrilateral, we can have two triangles. So the sum of angles becomes 2 times 180, that is 360. So it means a quadrilateral will have a sum of 360 degree. क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes, sir. आयशा, हुजैफा, जवेरिया, मानूर, इब्राहिम, तहरीम, उरूब ने तो बता दिया. ठीक है, गुड है. जी. Yes, sir. ठीक है, ओके जी. Now moving forward to the pentagon. A pentagon is a figure with 5 corners. It is not necessary कि उसकी सारी sides और सारे angles बराबर हों. अगर सारे sides और सारे angles बराबर हों तो we call it a regular pentagon. So right now we don't have a regular pentagon. We just have a pentagon, and at maximum we can make 1, 2, and 3 triangles inside a pentagon by using the vertices of the pentagon. So one triangle had a sum of 180 degree. So now we have 3 triangles. So one triangle equals to 180. Now 3 triangles equals to 540. Is that clear? Yes, sir. Okay ji. So hexagon is a figure with 6 corners. So we can have 4 triangles. So one triangle was equals to 180 degree. If we have 4 triangles, we are going to multiply it by 180. So my sum of angles becomes 7. Is that clear to all of you? जी सर. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, sir. Okay. आगे चलते हैं. तो हमने एक पैटर्न देखा. हमने क्या पैटर्न देखा कि क्वाड्रिलेटरल में 4 कॉर्नर्स होते हैं तो ट्रायंगल्स 2 होते हैं. पेंटागन में 5 कॉर्नर्स होते हैं तो ट्रायंगल्स 3 होते हैं. हेक्सागन में 6 कॉर्नर्स होते हैं तो ट्रायंगल 4 होते हैं. तो इसका मतलब है जितने भी कॉर्नर्स होते हैं वी हैव लेस देन 2 ट्रायंगल्स. तो इट मींस कि अगर हमारे पास एक फिगर हो जिसका नाम है डेकागन, तो डेकागन मींस वी विल हैव number of corners 10
and the number of triangles will be 8, and the sum of angle becomes, yes, can somebody tell me? 180 Sir, times 8 86. कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है? कोई multiply कर- 1440. Sorry, 2440. 1440. Yeah, 440. Yeah. Yes, you are right. Everybody is clear? Yes, sir. Okay. Moving forward. So now we are looking at this table. So this table shows us the method to find out the sum of angles and the value of a single angle. So triangle is a shape having 3 corners, quadrilateral with 4 corners, pentagon with 5 corners, hexagon 6, heptagon 8, nonagon 9, decagon 10. So we should know. So sum of angles we know. We are going to first take out the number of triangles. So quadrilateral, we have 2 triangles. Pentagon, we have 3 triangles. The number of triangles are 2 lesser than the number of corners. I have already told you. In this way, we are going to find out the sum of angles. All of you are clear about it? Yes, sir. Yeah. Okay. Now we are looking at the individual angle. What does individual angle means? Let's say we are looking at a regular triangle. A regular triangle means a triangle with all its angle equal. ऐसा triangle जिसके all angles equal हो. तो अगर 180 का total है, तो 3 angles हैं. 180 divided by 3 will give us 60. So it means one angle will be equal to 60 if it is a regular one. So the sum of quadrilateral angles is 360. What if we divide it by 4? If we divide it by 4, हमारे पास एक सिंगल एंगल की वैल्यू आ जाएगी जो कि 90 होगी. इसका मतलब कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल्स बराबर होंगे तो वो 90 के बराबर होंगे. Can anyone tell me that quadrilateral name? What is the special name of that quadrilateral? Right angle triangle. Right angle triangle. No. I'm talking about a quadrilateral. Can you repeat the question again? A quadrilateral having all angles 90 and it is a regular. Regular A means all square? angles and all sides Square? are equal. Yeah, square? it should be a Square. square. Yes, all of you are right. It is a square. Okay. Now what about a pentagon? A regular pentagon. Let's say the total sum is 540. And what if we divide it by 5? We will get the value of a single angle. Similarly, for hexagon, we will divide it by 6. For heptagon, we would divide it by 7 and so on. Now you got the method, all of you? All of you got the method? Yes, sir. जी sir. ओके. सो हमने ये पैटर्न देखा कि अगर नंबर ऑफ उससे 2 लेस होते हैं. तो लेट्स से अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉर्नर्स अगर n है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे पास 2 लेस होंगे. तो आई वुड से कि n-2 होंगे. तो वन ट्राइंगल इक्वल्स टू 180
So one triangle equals to 180. And how many triangles do we have? N minus 2. So if we have n minus 2 triangles and one triangle equals to 180, so I have got the formula. What is the formula? The formula says 180 times n minus 2. Is all of you are clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, what about the individual angle? We are going to divide it by number of angles. So for a single angle, we got the formula 180 times n minus 2 divided by n. All of you are clear? Josefa, are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Urub, are you clear? Ibrahim, Tahreem? Yes, Sir, sir. n is the number of sides. N is the number of sides, n is the number of corners, n is the number of angles. Okay. Okay, Ibrahim? Okay. जी. ओके आगे चलते हैं तो जनाब ये हम डिस्कस कर रहे थे इंटीरियर एंगल को तो इंटीरियर एंगल से क्या मुराद है और एक्सटीरियर एंगल से क्या मुराद है जरा देख लेते हैं तो हमने ये देखा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा बराबर होता है 360 के तो क्वेश्चन अराइजेस के जरिए एक्सटीरियर एंगल होता क्या है लेट्स से हमारे पास ड्राइंग एन ऑक्टागन फॉर यू गाइस so let's say this is an octagon so if I prolong any of the side so this angle is my interior angle and this is my exterior angle okay so now you guys know what is an exterior angle yes all of you Yes, sir. okay so all of you now know Huzafa, do you know now what is an exterior angle Yes, sir. The Okay. wire can sorry nothing, sir. okay so the property says that whatever the shape is either it is octagon heptagon hexagon the sum of exterior angle will always be 360 so single exterior angle will be equals to 360 divided by n because obviously we have n exterior angles so one exterior angle can be found out by dividing it by n so for say for octagon one exterior angle should be 360 over 8 for hexagon one exterior angle should be equals to 360 over 6 for decagon one exterior angle should be equals to 360 over 10 you got it you got it guys Yes, sir. जनाब इंटीरियर और एक्सटीरियर को प्लस करो हमेशा 180 बनेगा इंटीरियर और एक्सटीरियर हमेशा 180 बनेगा इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम हमेशा 180 बनेगा जनाब ये लेट से मैंने एक डायग्राम बनाई कुछ थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाया मैंने तो जनाब इसके अंदर जो इंटीरियर है वो यहाँ है जो एक्सटीरियर है वो बाहर है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है तो इसका सम हमेशा 180 के बराबर होगा
ओके, सो आई वाज सेइंग कि एक इंटीरियर होगा एक एक्सटीरियर होगा, राइट? एंड इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम हमेशा 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम हमेशा 180 होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हुज़ैफा, आयशा, इब्राहिम, Yes, sir. मानूर, Yes. जी सर क्लियर है। ओके यस सर क्लियर है। ओके ओके okay, let's say we are talking about n is equals to 8. So we know that the sum of exterior angles is always equal to 360. So what if I divide it by 8? I will get one exterior angle that is of 45. So n equals to 8. I have divided 360 by 8 to get one exterior angle. So my one exterior angle is 45. So if the exterior angle is 45, what if I subtract it from 180? I will get the value of interior angle, because interior और exterior का sum हमेशा 180 होता है। तो आप ये वाला मेथड यूज करें या आप इंटीरियर एक्सटीरियर वाला मेथड यूज करें, आंसर आपके पास सेम ही आता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है भाई। So now we are discussing some triangles. So we have different types of triangles. What is a scalene triangle? A scalene triangle is a triangle which has no side equal. The scalene triangle has no side equal. Okay. Now isosceles triangle. Isosceles triangle is a triangle in which two sides and their opposite angles are equal. So we have two sides equal and their opposite angles are equal. Equilateral triangle. Equilateral triangle is a triangle in which all the sides and all the angles are equal and all the angles are of measure 60 degrees. Right angle triangle. A right angle triangle is a triangle in which we have a 90 degree with us. तो 90 डिग्री राइट एंगल को कहते हैं, इसीलिए उस ट्राइंगल को भी हम राइट ट्राइंगल कहते हैं। जो 90 डिग्री है वो हमारा लार्जेस्ट एंगल होता है और उसको जो ऑपोजिट साइड होती है उसको हम लार्जेस्ट साइड कहते हैं। तो लार्जेस्ट साइड हमारी हाइपोटेन्यूज कहलाती है, जो अदर टू साइड्स हैं उनको हम बेस और परपेंडिकुलर कहते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल हमारे पास होता है राइट ट्राइंगल में। राइट ट्राइंगल में जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो जनाब ये आपके पास एक अदर राइट ट्राइंगल है, इसमें जो 90 डिग्री है उस 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कहलाता है। बाकी जो बाकी दो हैं उनमें से आप किसी एक को बेस कह दें और किसी एक को परपेंडिकुलर कह दें। जनाब एंगल ऑपोजिट टू हाइपोटेन्यूज वो 90 होता है, ये बात पहले बता चुका हूं आपको। जो अदर टू एंगल्स हैं अगर आप उनको सम करेंगे तो 90 बनेगा। भाई देखें, एक तो ये खुद 90 हो गया, बाकी इन दो बकाया को जो अगर आप सम करेंगे तो दैट विल ऑलवेज बी 90। तो एक 90 ये खुद होगा और बाकी दो को सम करेंगे तो वो भी 90 होगा। जनाब अगर साइड ए बड़ी है, ये जो स्मॉल लेटर है ये साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो जनाब अगर स्मॉल लेटर ए जो है वो यहाँ पर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड आई एम सीइंग कि भाई साइड ए यहाँ पर बी से भी बड़ी है और सी से भी बड़ी है, तो इसका मतलब साइड ए यहाँ पर लार्जेस्ट है। एंड एज वी नो that the largest side in a right triangle is basically
what? Hypotenuse. So in this case, if A is the largest, then A is the hypotenuse. And it will follow the Pythagoras theorem. The Pythagoras theorem says hypotenuse square equals base square plus perpendicular. Is that clear? Yes, sir. Josefa, are you clear? Josefa, is there anything you are not clear? No, sir. Manur, are you clear? Tehreem, are you clear? जी sir. Javeria, are you clear? Yes, sir. Okay. So we know about the Pythagoras theorem that hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. And similarly for side B and side C. We have different quadrilaterals. The first we know is square. A square has equal and parallel opposite sides. A square has equal and parallel opposite sides. What about the adjacent sides? These two are adjacent. Are they equal? Yes, they are equal. Are they perpendicular? Yes, they are perpendicular. What about the diagonals? Diagonals are perpendicular and equal. So these two are called the diagonals. Okay. Rectangle. What does it say? It says opposite sides are equal and parallel. Adjacent sides. Adjacent sides are perpendicular to each other, and the diagonals are only equals to each other. Rhombus. Rhombus is a figure in which opposite sides are parallel and equal, but adjacent sides are only equal. This side is equals to this side, but obviously not perpendicular. The diagonals are perpendicular to each other. Parallelogram. Its opposite sides are equal and parallel. Their opposite angles are equal. Okay, should I move on? No, sir. Should I move on, guys? Yes, sir. Okay. So now again, we are discussing some quadrilaterals. Trapezium. Trapezium is a shape in which one pair of opposite sides is parallel. In this diagram, you can see this pair of opposite lines is parallel. The direction is same. It's kind of a shape of iron. These two lines, this pair is not parallel. So one pair is parallel. A trapezoid. Trapezoid is basically a special trapezium in which one pair of opposite lines are parallel and one pair of opposite sides is equal to each other. तो ट्रेपेजॉइड में क्या होता है? ट्रेपेजियम वाली बात तो होती है कि भाई एक पेयर आपस में पैरेलल होता है और जो एक पेयर रह जाता है वो आपस में इक्वल लेंथ में होता है और इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बराबर होते हैं और इसके ऑपोजिट एंगल्स नहीं बल्कि एडजेसेंट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं. साइड जनाब इस शेप की होती है जिसमें ये वाला पेयर इक्वल्स टू ये वाला पेयर और ये वाला पेयर इक्वल्स टू ये वाला पेयर होता है.
तो इसमें एडजेसेंट पेयर जो है वो इक्वल होते हैं और डायगोनल्स बराबर नहीं होते, एक दूसरे के परपेंडिकुलर जरूर होते हैं. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Sir, 1 second, let me write.